and welcome back to Lit Up with Annie. We are reading a book by P.K. Nayar on literary theory and cultural studies, and we have finished our first chapter from the book. And we are moving on to the second chapter today, which is Poststructuralism. So, if you haven't done the first chapter yet with me, you can go on to see the first four lectures which we have done, in which we have covered the first chapter. Let's move on today to the second chapter, which is post structuralism and deconstruction. What all are we going to read in this chapter? We are going to look at Michel Foucault, Roland Barthes. We already saw Barthes in structuralism once, but as we discussed that he's a bridge, he's there in both structuralism and post structuralism. We will read him again. Derrida. So Roland Barthes, Derrida, two of the major deconstructionists. Then we read about Derrida's or deconstructionists की जो terms है phonocentrism, logocentrism, metaphysics of presence, supplement, difference, there is no outside text. तो यहाँ तक डेरिडा का आ गया. उसके बाद another deconstructionist is Paul Dieman. Another one is Hillis Miller. ठीक है, तो ये deconstructionists को हम पढ़ेंगे. We'll talk about the terms aporia, binaries, reversals. Then we move on to post-structuralism and postmodernism. So in the paid lectures, we are doing postmodern literature, and we discussed that postmodernism and post-structuralism go hand in hand. We talk about the meta-narratives, we talk about the grand narratives, and that's what we'll discuss here in detail. Then in the postmodern aspect, we'll talk about Baudrillard, his concepts of hyperreal and simulation. We'll talk about Giles Deleuze and simulacra, and the major name in postmodernism, which is Lyotard. This is all that. Oh, Christopher and Cora. In the last chapter, we saw Christopher's name, and we saw that it will be discussed in the next chapter. So here, post-structuralism, flows and deterritorialization. Then post-structuralism, postmodernism and narrative, and theory of minor literature. Let's start quickly. Structuralism, as we have seen, developed a model of reading texts and cultural artifacts. Structuralist narrative theory, for example, generated schemes for reading novels and poetry, unpacking the elements that constituted the text's meaning. While it was a rigorous and thorough textual analysis that paid close attention to language and form, it was also rather formulaic. तो क्या कह रहे हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म में हमने देखा कि उन्होंने बड़ा अच्छा एक मॉडल क्रिएट किया कि इस तरह से हमें एक टेक्स्ट को पढ़ना चाहिए या किसी भी कल्चरल के आर्टिफैक्ट को पढ़ना चाहिए. कोई फिल्म है, कोई टीवी शो है, या कोई नॉवल है, कोई पोइट्री है, किसी को भी पढ़ना हो तो आपको अनपैक करने हैं उसके एलिमेंट्स, और फिर आपने मीनिंग देखना है कैसे जनरेट हो रहा है. बहुत अच्छा प्रैक्टिस था, रिगरस था, थरो था, लेकिन बहुत ज़्यादा फॉर्मूलाइक था ना. यू वर नॉट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स. एक फॉर्मूला दे दिया है आपको, आपने उसी फॉर्मूला के अंदर अनपैक करनी है चीज़ें. द अटेम्प्ट इन स्ट्रक्चरलिज्म वाज टू सीक एन ऑर्डर, है ना, एक साइंस की तरह बनाना, एक ऑर्डर, एक स्ट्रक्चर हो टू नॉवेल्स, टू मेन्यूज, पोइट्री, म्यूजिक, विजुअल टेक्स्ट, वॉट एवर. तो एक ग्रिड्स, पैटर्न्स, स्कीम्स, प्लॉट्स उसमें हैं फिक्स्ड, always assuming that the text would yield its meaning once we unravel the core elements, right? कि सिंपल है कि एक एलिमेंट है, उसको आप अनपैक करो, खोलो सारा, उसके अलग अलग आप एलिमेंट्स को देखो, एंड यू विल अनरावल द मीनिंग ऑफ इट. 1960s में क्या हुआ, कुछ क्रिटिक्स और फिलोसोफर्स आए, उन्होंने कहा कि यार ये थोड़ा ज़्यादा रिजिड है, थोड़ा फॉर्मूलाइक है, तो हम कुछ और करना चाहते हैं. दे बिगैन टू रिबेल against what they saw as a restrictive and limited critical practice of viewing the world. They were not against structuralism, please remember. They were only rebelling against it, that it is very restrictive. We can take this and we can make more from this. So, emerging in the context of civilian unrest, all the major French philosophers and thinkers of the latter half of the 20th century were associated in some form or the other while with the 1968 student rebellions in Paris and geopolitical disasters like the Vietnam War,
Post structuralism was the expression of a sense of disillusionment. So it seemed very easy. It seemed very formulaic that you take out the elements, you understand the meaning. If we look at the atmosphere at that point of time, we know that what was happening, right? The world had already seen World War II. There were different rebellions happening around the world. Student rebellion चल रहा था, कुछ वियतनाम वॉर में कुछ लोग involved थे. So post structuralism wanted to be an expression of that kind of disillusionment which was being seen in the world, with the nation state, with philosophers of emancipation, and with critical thinking itself. So it emerged as a rupture, a shift away from what the prominent thinkers saw as formulaic, ordered work of structuralism. ठीक है, तो अभी चल रहे थे इकट्ठे, लेकिन अब इन्होंने कहा कि नहीं, एक रप्चर, एक डिफरेंट पाथ इन्होंने ले लिया. Roland Barthes was the last major structuralist that we read, apart from the narratology part. Of course, Barthes का work हम narratology में ही पढ़ते हैं. So Roland Barthes का जो बाद का work था, it moved away from his structuralist phase, where we talked about his codes, the proeretic code, the hermeneutic code, the cultural code, semic code, symbolic code. फिर इन्होंने बात करनी शुरू की रीडर्स के बारे में. अभी तक रीडर्स के बारे में किसी ने बात की ही नहीं थी स्ट्रक्चरलिज्म में. He was one of the first to start speaking of the openness of the text. How is the text open? Because the text is connected with the other text, number one. There is the role of the reader also in production of the meaning. Therefore, the text is open to multiple interpretations. I will interpret a poem in one particular way. Another person will interpret in his or her own way. So the text is open and we will have multiple interpretations. The writings of Jacques Derrida in the mid 1960s appeared in English in the form of conference papers. So Derrida was already going places and presenting his papers. So Derrida अभी इंग्लिश में नहीं था कुछ भी. It appeared in English in the mid 1960s, conference papers की तरह, with his first complete book, which was Of Grammatology. Translate किया था इसको गायत्री स्पिवाक ने 1976 में. So from the early 1970s through the 1980s through the 1990s, the work of Derrida, the historian of ideas, Michel Foucault, the philosophers Jean-Francois Lyotard, Gilles Deleuze, and Guattari, the Marxist literary critic Frederick Jameson, and semiotician psychoanalyst Julia Kristeva. Spivak's own work, that of postmodernists Slavoj, however it is pronounced, Zizek, Baudrillard, and feminists like Butler, created a movement in literary criticism, media studies, and philosophy. तो क्या हुआ? 1970s, please remember the date, 70s, 80s और 1990s. डेरिडा का वर्क्स आए, मिशेल फूको ने अपनी थ्योरीज दी, लियोटार्ड ने अपना दिया, डेल्यूज ग्यूटारी ने अपना दिया, फ्रेडरिक जेमसन जो मार्क्सिस्ट थे, इन सब ने अलग अलग फील्ड के ये लोग हैं. फूको कहते हैं he doesn't want to be labeled. हम लोग इसको पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में पढ़ रहे हैं, but you can't really call him a post structuralist for that matter, because he never liked being labeled at as a particular I don't know, in a particular field. Similarly, Deleuze and Guattari का वर्क आपको यहाँ भी मिलेगा, साइकोएनालिज्म में भी मिलेगा, हर जगह मिलता है. फ्रेडरिक जेमसन मार्क्सिस्ट सिमियोटिशियन है, क्रिस्टोफा यहाँ भी पढ़ेंगे, तो अलग अलग जगह से. And all of these people created a movement in literary criticism, media studies, philosophy, सब जगह. इसलिए तो इतना interdisciplinary है ये सब कुछ. पोस्ट, बस ये नाम आपने याद रखने सबने. Post structuralism thus has close contiguities, both thematic and contextual, with postmodernism, as we discussed. कि बहुत close हैं दोनों, post structuralism और postmodernism. Now, post-structuralism has been one of the most influential movements in philosophy and critical theory in the 20th century and helped the rise of new forms of thinking. Post-structuralism ने क्या किया? अलग तरह का thinking ये लेके आए हर जगह. social science में, अगर हम social science में देखें तो in the works of James Clifford Geertz, please don't ignore these names. Michael
Tossing, who's in anthropology, James Derrien in political theory, Bruno Latour in social studies of science, and new historicists. इन सब के लिए ये जो फिलॉसफी आया, एक पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म आया, it was a very influential movement that helped rise different forms of thinking in all of these different fields. एक बैकग्राउंड है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का, अभी शुरू होगा, ठीक है, क्या होता है. सबसे पहले हम बात करेंगे मिशेल फूको की. मिशेल फूको इज द प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री of the systems of thought, developed what he called archaeology of human science. So this is one of the terms that Foucault gave us, archaeology of human science. जिसमें क्या होता है, he studied the rise of the forms of knowledge, the classificatory mechanisms of knowledge, and the rules by which knowledge was collected, archived and disseminated. Knowledge को study कर रहे थे, कैसे कि एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नॉलेज, कोई भी नॉलेज ले लो आप, कि लेट्स से नॉलेज अबाउट बीइंग अ क्रिमिनल, अगर आपने इसको स्टडी करना है तो यू टू स्टडी कि ये शुरू कैसे हुआ, राइज कैसे हुआ, क्रिमिनल टर्म आया कैसे, कहाँ से आया, क्लासिफाई कैसे किया हमने उस नॉलेज को, रूल्स क्या थे जिससे हमने उसको कलेक्ट किया, रखा और फिर डिसेमिनेट आगे बढ़ाया उसको. Foucault's interest lay in unpacking the underlying structures of thinking, कि कैसे हम सोचते हैं अलग अलग fields of knowledge में, because he argued these structures conditioned and constructed, number one, the process of inquiry. इससे हमें पता चलेगा कि process क्या है knowledge gathering का पूरा, very nature of the object about which the knowledge is being gathered, nature क्या है उसका, and the possibilities of using and distributing this knowledge. So in other words, Foucault saw scientific inquiry as an exercise in power, where the physician, scientist, psychiatric, कोई भी हो, they constructed a particular condition as diseased. Right? कैसे? यहाँ पे एक आप पावर एक्सरसाइज कर रहे हो, आप एक पर्टिकुलर पोजीशन पे हो, उस पोजीशन में आप कुछ टर्म्स यूज कर रहे हो, आप लेट्स से एक डॉक्टर हो, आपके पास आपके पेशेंट्स आ रहे हैं, पहले तो उनको टर्म करना पेशेंट्स, फिर डॉक्टर्स किस तरह का टर्म्स यूज करते हैं, वी हैव टू इन्वेस्टिगेट दिस, इन्वेस्टिगेट दिस, कोई भी, फिर वो ऐसे कुछ टर्म्स यूज करेंगे जो आपको कुछ पता नहीं होगा, जानबूझ के करते हैं क्या, मुझे सच में नहीं समझ में आता, व्हाई डू दे डू इट, व्हाई डू दे कीप टॉकिंग इन मेडिकल टर्म्स, जब उनको पता है कि उनके जो पास आए हैं लोग, उनको नहीं समझ में आएगा. एंड हैव यू नोटिस्ड पीपल आर एक्चुअली अफ्रेड of really asking questions. They are paying 500 rupees for to visit a doctor for 5 minutes, और वो हम क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे उनसे. तो कुछ तो चल रहा है. नॉलेज और पावर, उसके पास नॉलेज है, हमें पता है, therefore a person who has knowledge is in the position of power. राइट, ऑल ऑफ दीज पीपल, चाहे फिजिशियन है, साइंटिस्ट है, कोई भी है, ये लोग एक कंडीशन क्रिएट कर देते हैं, डिजीज बोल देते हैं उसको, एंड दिस डिजीज इज टू बी इन्वेस्टिगेटेड एंड नॉलेज अबाउट इट इज टू बी केयरफुली कंट्रोल्ड बाय सर्टेन अथॉरिटीज. पूरा डिस्क्लोज ही नहीं करना. तो नॉलेज कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, शेयर्ड एंड यूज्ड थ्रू पर्टिकुलर फॉर्म्स ऑफ स्पीच. ये सारा नॉलेज कैसे हो रहा है, लैंग्वेज में हो रहा है ना, और इसी को इसने कहा डिस्कोर्स, फूको ने, या इसको हम कहते हैं डिस्कोर्स, समथिंग अबाउट विच वी आर टॉकिंग अबाउट और वी आर राइटिंग अबाउट. डिस्कोर्स क्या है, इट्स द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पीच, रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है. सो इट डिफाइंस व्हाट कैन बी सेड, व्हाट कैन बी स्टडीड एंड द processes of doing it. So it is the context in which meaning itself is produced. हम किसी भी एक चीज के बारे में बात कर रहे हो अगर आप, तो आप डिस्कोर्स दे रहे हो. इट्स अ डिस्कोर्स. जैसे विमेन राइटर्स हैं, विमेन या फेमिनिस्ट्स हैं, वो हमें जब बात कर रही हैं वो पेट्रियार्की के बारे में, एक फिलॉसफी दे रही हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे, डिस्कोर्स ऑफ पेट्रियार्की. एक डॉक्टर आपको कुछ बता रहा है, उसको आप क्या कहोगे, डिस्कोर्स ऑफ मेडिसिन. कोई साइकियाट्रिस्ट है तो डिस्कोर्स ऑफ साइकियाट्री देगा वो.
So, to take a simplistic analogy, in a court of law, emotions and emotional responses to questions cannot be taken as answers, right? The court insists that the defendant or the accused answer the questions and not with tears, laughter, or anger. आप बस आंसर करो. The discourse of the law in the court relies upon what it sees as evidence, logic, rational argument, rather than angry outbursts or hysteria. Similarly, in the case of science, it is not adequate to say, I believe this to be true. The discourse of science asks for empirical, demonstrable proof that it is true. So, Foucault's originality lay in discerning the underlying structures of power that informed neutral scientific inquiries. यहीं पे फूको का सम सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वर क्लासिफाइड एज सिक, है ना? हम कुछ लोगों को बोलते हैं सिक हैं, ये क्रिमिनल है, ये मैड है, ये मेंटली अनस्टेबल है, इस तरह के टर्म्स हम यूज करते थे, सो दैट दे कुड बी प्लेस्ड अंडर सर्वेलेंस. अब सिक है, अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा. क्रिमिनल है तो जो प्रिजन में, उसको भी 24 घंटे चल रहा है ऑब्जर्वेशन, उसका सर्वेलेंस चल रहा है. अगेन मैड है तो मेंटल इंस्टीट्यूशंस में सर्वेलेंस चल रहा है. और कौन कर रहा है ये सर्वेलेंस? कोई पर्टिकुलर काइंड्स ऑफ अथॉरिटीज. So this surveillance was coded as a discourse, a terrain of thought, a system of knowledge, a particular kind of language that allowed some things to be said and disallowed some others. जैसे बिग बॉस बिग बॉस देखते होंगे आप लोग, तो उसमें सर्वेलेंस है ना पूरा. अब वो तो खैर स्क्रिप्टेड होता होगा, बट क्या बोलना है, क्योंकि आप हमेशा कैमरा में हो, क्या नहीं बोलना है, सम थिंग्स आर अलाउड, सम थिंग्स आर नॉट अलाउड. तो जब आप इमेजिन करो कि आपके ऊपर 24 घंटे सर्वेलेंस है, चाहे उस सर्वेलेंस को कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, आप कॉन्शियस हो कि मैं इतनी सी भी चीज कुछ इधर उधर कर दूं तो देखी जाएगा, दिख जाएगा. Thus, the priest used the discourse of religion, of sin, discourse of sin, discourse of salvation. हम सुनते हैं ना ये कहानियां कि अच्छे कर्म करोगे तो जन्नत नसीब होगी और बुरे करोगे तो जहन्नुम में जाओगे, इस तरह की कहानियां. ये डिस्कोर्स है किसका? प्रीस्ट का, रिलीजन का, सिन का या सैल्वेशन का, इन ऑर्डर टू प्रीच पर्टिकुलर नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर, ताकि आप एक पर्टिकुलर वे से बिहेव कर सको मैरिज में, सेक्सुअलिटी में, फैमिली में, नहीं तो भगदड़ मच जाएगी. The physician used the discourse of sickness and health in order to prescribe particular kinds of lifestyles. आप healthy रहो, exercise करो, अच्छा खाओ. The psychiatrist constructed particular kinds of behavior as deviant through a discourse of rationality. So Foucault's major contribution has been to show these discourses condition people's lives. ये जितने भी डिस्कोर्स हैं वो हमारी लाइफ को एक्चुअल इफेक्ट करते हैं, हम लोग सोचते नहीं हैं इनके बारे में. एंड इट ऑल्सो इन्फॉर्म्स आवर थिंकिंग. हम लोग एक छोटे बच्चे को सिखाते हैं ये अच्छी बात नहीं है, हम भी तो डिस्कोर्स दे रहे हैं ना, अच्छाई का डिस्कोर्स दे रहे हैं या बिहेवियर का डिस्कोर्स दे रहे हैं उसको, और वो उसको शेप कर रहा है, उसकी थिंकिंग को शेप कर रहा है. By focusing on power as central to the human condition, Foucault was able to argue that human relations, सब चीजों में पावर है. आप जितने भी रिलेशनशिप्स हैं उन सब में पावर दिखेगा आपको. मम्मा पापा के रिलेशनशिप में भी पावर डायनेमिक होता है, कोई एक डोमिनेंट होगा, कोई एक सबमिसिव होगा. अगर बैलेंस है तो एक टाइम पे एक डोमिनेंट होगा, किसी टाइम पे दूसरा होगा. All are caught up in the struggle of power, and discourse is a terrain on which this struggle is carried out. The person or institution that controls discourse also controls the subjects in those discourses. So Foucault underscored the discursive basis of power, social relations, and institutions by showing how so-called objective disciplines like sciences, they all relied upon assumptions about the object to be investigated, used particular forms of language and thought in order to talk about his object, and eventually constructed an institution around the object for its study and control. So this argument has been best used by the 20th century feminists, which have shown how the discourses of patriarchy, बोल बोल के कि औरत को ऐसे होना चाहिए, औरत को वैसे होना चाहिए, डिस्कोर्स है पेट्रियार्क की सोसाइटी का. ये ऐसी प्योर वुमन होती है, ऐसी सडक्टिव वुमन होती है, ऐसी हिस्टेरिकल वुमन होती है.
They've been institutionalized in uneven structures of marriage, education, religion, the law, history, literature, everywhere you will find it. So Foucault's argument helped them show how discourse has material consequences for people and that discourses construct and legitimize unequal power relations. Every discourse has an object, एक language है, एक authority figure है, who uses this language to describe or classify the object, and a corrective mechanism also that draws upon the description and classification. Here are a few examples of how discourse works, okay? The vagrant was the object constructed in a discourse of economics as a non productive, itinerant body of the authority figure of the economist or social commentator, and whose deviance, non employment, was corrected through the institution of either forced employment or charity. The immoral individual or sinner was the object constructed in the discourse of religion. ये immoral individual है, ये पापी है, तो उसमें सिन, सैल्वेशन, वर्च्यू, पनिशमेंट, इस तरह की वोकैबुलरी आएगी. अथॉरिटी फिगर उसमें प्रीस्ट होगा, whose deviant morality was corrected through कि अगर तुम्हें पश्चाताप करना पड़ेगा, तुम डुबकी लगा के आओ या तुम कन्फेशन करो, है ना. अलग अलग रिलीजन्स में कोई कन्फेशन है, कोई अपने अलग अलग तरह का पश्चाताप करना पड़ेगा, फास्टिंग, कुछ भी. क्रिमिनल किसने बनाया? डिस्कोर्स ऑफ लॉ ने, कि तुमने क्या ठीक किया, क्या गलत किया. अथॉरिटी फिगर कोर्ट या जज, उसका डिविएंट बिहेवियर कैसे करेक्ट होगा? तुम जेल जाओ. So Foucault's work adapted in the 20th century cultural theory and criticism has shown the sections of society have been subjugated through particular discourses. हम देखते हैं specific institutional forms of control were created to ensure that these sections remained subjugated. Subjugated क्या होता है? दबा के रखना. Popular and other representations जैसे art है, literature है, they control the images of these sections. ये तो हमेशा होता है ना कि एक सेक्शन आएगा सोसाइटी का जो oppressed है, subjugated है किसी एक पर्टिकुलर डिस्कोर्स से. लेट्स से क्लास का अगर हम या कास्ट का डिस्कोर्स ले लें तो हम देखेंगे दैट लोअर क्लास, द लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज सब्जुगेटेड थ्रू डिस्कोर्स ऑफ, कोई भी डिस्कोर्स हो सकता है. स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशनल फॉर्म्स ऑफ कंट्रोल वर क्रिएटेड. जैसे हम लोग जब मार्क्सिज्म पढ़ेंगे तो हम देखेंगे अल्थ्यूजर बताते हैं कि कैसे फैमिली, स्कूल, सोसाइटी में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हेल्प करते हैं इस तरह की आइडियोलॉजी को बने रहने में. ये भी वही कह रहे हैं कि पॉपुलर चीज़ें जैसे लिटरेचर है या आर्ट्स है या फिल्म्स हैं, ये इमेजेस को कंट्रोल करती है. जैसे कि अगर हम लोअर सेक्शन की बात कर रहे हैं तो लेट्स से रामू काका की इमेज, उसको वो कंट्रोल करे, वो दिखाएंगे कि रामू काका अ हाउस हेल्प कैसा होना चाहिए, उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, हाउ लॉयल ही और शी शुड बी. उसको वो दिखाते हैं, उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, नेचुरल फॉर्म में दिखाते हैं. ठीक है, नेचुरलाइज्ड. द डिफरेंस कि सब्जुगेशन हो रहा है, उनका हो नहीं रहा है. उनको तो बल्कि जो अमीर लोग हैं अपना अच्छा खासा पैसा दे रहे हैं और इन द टाइम्स ऑफ क्राइसिस हेल्प कर रहे हैं, लेकिन जब कभी शक की बात आए तो पीट भी रहे हैं, विच इज ओके, क्योंकि बाद में वो सॉरी भी बोल दे रहे हैं. नेचुरल है, डिफरेंस नेचुरल है और इट शुड रिमेन लाइक दिस, क्योंकि तभी ये लोग अच्छा सर्वाइव कर पाएंगे. So these discursive processes justified and led to the installation of corrective mechanisms, institutions to keep the sections controlled. The discourse and institutional structures combined to give power to particular classes or authorities. Now, these discourses are thus a manifestation of the will to power, where structures of power in society retain their power over the marginal and the subordinates through the creation and control of particular discourses. ये discourse manifest करते हैं will to power, जहाँ पे जो different structures हैं power के society में, वो अपनी power को रखते हैं over the marginalized people. How? They control the discourse because. Another term is genealogical या फिर archaeological analysis of discourses. अब हमने trace करना है कि कब ये discourses form हुए. So genealogy is the tracing of those discourses and institutions that have formed our ideas of sexuality, sickness, criminality, morality, madness, or improvement.
Genealogy does not seek a linear historical account, rather, it attempts to unravel the contradictory, conflictual forces that have created these abstract ideas and ideals. So it can be summarized as history of ideas that pays attention to social forces, institutional mechanism and power structures जो हमारे thoughts ideas को influence करता है. So the clinic, the prison system, asylum are institutions that began life in particular discourses of sickness. है ना, clinic क्या है, हम जाते हैं, prison system, asylum, ये सब institutions हैं जो किसी ना किसी particular discourse की वजह से शुरू हुए. Discourse of sickness, discourse of criminality, discourse of madness. Prison, in Foucault's now very well known reading, इनका work है कि discipline and punish. For example, is the institutionalization of the discourse of discipline. कि discipline कैसे कर रहे हैं लोगों को? Surveillance के through. So discipline begins to focus on the body in early modern Europe, and the disciplinary apparatuses shift focus from public rituals of punishment. पहले क्या होता था, flogging मारते थे, publicly hang कर देते थे या काट देते थे in the 19th century, to incarceration where the punished body is hidden away from the public gaze. अभी नहीं होता. तो एक genealogical study reading such as Foucault's traces not only the institutional structure and its evolution, but also the way in which concepts of criminality have been defined. तो हम सिर्फ इंस्टीट्यूशन का स्ट्रक्चर को ट्रेस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे फूको, कि वो कैसे इवॉल्व हुआ थ्रू हिस्ट्री. क्रिमिनलिटी इन इटसेल्फ जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया, the kind of discourses that were put in place, for example, the sacredness of property, the body as a site where punishment or rewards can be played out. And body एक ऐसी चीज है जिस पे आप punishment या rewards दे सकते हो. The contradictions and contests over and against these dominant discourses, the classes that dominated these discourses, and the artistic, legal, biomedical representations of these discourses. ठीक है, तो ये हो गया हमारा फूको. बट फूको डजंट रियली एंड हियर, इसीलिए आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर बिकॉज आई वांट यू टू रीड मोर अबाउट फूको. फॉर एग्जांपल, हाउ यू ओपन योर इंटरनेट, you go to Terms by Foucault, and you will find this page here, and you will find major terms which are given by Foucault. Don't go through all because बहुत सारी हैं. Yes, archaeology versus genealogy, biopower, through history how Foucault has been asked, तो वही मैं आपको बता रही हूँ. फिर discipline because that's one of his major works. Discourse, discursive formation क्या होता है? Episteme, एग्जाम में भी आया था. Episteme होता है small units of knowledge. Everything is surrounded by knowledge, power, discourse. किस तरह से वो इन terms में है, कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है? in the order of things. उसके बाद gaze, in the birth of clinic. Lay regard is the word. Difficult है translate करना, but more or less it means gaze. Genealogy, penopticism and surveillance. ये जो अभी हम पढ़ रहे थे discipline and punish, इसमें penopticism is the original term जेरेमी बेंथम की है. ठीक है, डिजाइन प्रिजन का, सर्वेलेंस का पूरा सिस्टम वहां से इन्होंने लिया है. पावर, ऑफ कोर्स, पावर नॉलेज, sexuality, in the history of sexuality, ये टर्म्स करनी है. दूसरी चीज जो आपने करनी है वो है you visit Foucault's page, Wikipedia page, and go to his works.
कहाँ है? Maybe there's a different page of it. क्योंकि शायद ज़्यादा वर्क्स हैं तो maybe that's why. Notable works are written here on top. ये मैडनेस इन सिविल। अब आपने करना क्या है, आपने एक तो इनकी क्रोनोलॉजी करनी है वर्क्स की, दूसरा यू टू सी कि कौन से वर्क में कौन सा टर्म दिया गया है। वंस वी आर डन विद द बुक, आई ट्राई टू कवर दिस थिंग कि हर एक राइटर का कौन सा टर्म है, कौन सा टर्म कौन सी बुक में है, ठीक है, एंड फाइंड हिज वर्क लिस्ट। लिखे तो हैं यहाँ कहीं, कहाँ है पता नहीं। ये रहा। Okay, so here it is. You have to see the translations, ठीक है? So madness in civilization, the birth of clinic, the order of things, archaeology of knowledge, discipline and punish, फिर history of sexuality 4 volumes में. Okay, so this is what you have to do. That is it for today, and I will see you in the next one, wherein we will do Roland Barthes and Derrida post ये deconstruction. ठीक है? If you're liking the class, please share it with others and like. If you've not subscribed to that, you can also join our Telegram group. The details are in the description box. And if you wish to join the full course, please do that. NET के लिए या UPPSC के लिए या फिर any of the writing course that you are preparing for. You can get in touch with me. See you. Bye bye.